तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा होगा इंटरनल SCI। These connectors are located on the motherboard itself and allow for the connection of internal SCSI device such as hard drive or tape drive. चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। इंटरनल SCSI जो है इसका फुल फॉर्म हम पिछली वीडियो में बता दिए, लेकिन एक बार हम फिर से बता देते हैं। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होगा। चलिए इसका हिंदी हम समझते हैं। यह कनेक्टर मदरबोर्ड पर ही ये सेट रहता है, लोकेटेड मतलब स्थित रहता है। और आंतरिक SCSI डिवाइस जो है डिवाइस जैसे कि हार्ड ड्राइव या टेप ड्राइव के कनेक्शन के यह अनुमति देता है। चलिए हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस। ये इंटरनल SCSI था, ये एक्सटर्नल SCSI है। The connectors are located on the back of the computer case and allow for the connection of external SCSI device
such as scanners of CD, DVD, drives। चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। यह कनेक्टर कंप्यूटर केस के ये पीछे स्थित रहता है। यहाँ लिखा हुआ द कनेक्टर आर लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ द कंप्यूटर केस। ये जो कंप्यूटर केस है, ये कनेक्टर कंप्यूटर केस है, ये पीछे स्थित रहता है। और स्कैनर और सीडी डीवीडी जैसे ड्राइव को ये बाहरी SCSI डिवाइसों को ये कनेक्शन करने की अनुमति देता है। चलिए हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है SCSI। कंट्रोलर चलिए हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। फ्रॉम मदरबोर्ड में include an integrated SCSI controller which allow for the connection of SCSI device to the motherboard without the need for a separate SCSI card. The SCSI controller में support a range of SCSI standards such as
SCSI 1, SCSI 2, SCSI 3 और सॉरी गाइस थोड़ा हम ध्यान नहीं दिए, और अल्ट्रा SCI। चलिए हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। SCSI कंट्रोलर जो है वो कुछ मदरबोर्ड में एक इंटीग्रेटेड SCSI इसका कंट्रोलर शामिल होते हैं, जो कि अलग अलग SCI कार्ड की आवश्यकता के बिना ये SCSI डिवाइसों को सीधे मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। हाँ, जैसे कि हम ये भी SCSI कंट्रोलर जो है वो SCSI स्टैंडर्ड, यहाँ लिखा हुआ SCSI कंट्रोलर में सपोर्ट द रेंज ऑफ SCSI स्टैंडर्ड की एक सीरीज़ को सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि हम यहाँ लिखे हुए SCSI 1, 2, 3 और अल्ट्रा SCSI। ओके, तो इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल SCSI जो है ये बाहरी जो इसमें स्कैनर, CD, DVD और डिवाइस जो है ये बाहरी उपकरणों को, बाहरी ऐसे डिवाइसों को ये कनेक्शन अनुमति देता है। और ये जो है ये SCSI कंट्रोलर जो है वो SCI स्टैंडर्ड की एक सीरीज़ को सपोर्ट कर सकता है, SCI 1, 2, 3 और अल्ट्रा SCSI। ओके, तो आज की वीडियो में हम 3 जो पॉइंट था वो हम समझा दिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो आपको हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपना डाउट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।